नमस्ते सभी को। एनएमओ बीकानेर की इस एकेडमिक वेबिनार सीरीज में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज अपने इस एकेडमिक सीरीज के तीसरे एपिसोड में हम डॉक्टर सुमिति पारिक, जो कि जयपुर में बेस्ड एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनसे सीखेंगे और जानेंगे कुछ सीजनल डर्मेटोलॉजिकल एलिमेंट्स के बारे में, कि स्किन की वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या समस्याएं हैं जो कि जनरली आमतौर पर लोग एनकाउंटर करते हैं, और उसका निदान किस प्रकार से हम कर सकते हैं। और लास्ट में अगर समय मिलेगा तो एक छोटा सा Q&A सेशन रहेगा, तो आप लोग अपने नोट्स बनाते रहें। क्वेश्चंस एक बार पार्किंग लॉट में अपने नोटपैड में लिख लें और सेशन के एंड में स्पीकर को उसके लिए डिस्टर्ब करें। सो विद ऑल दिस said and done, I heartily invite Dr. Sumiti Parik, who was also my senior in medical college, to tell us something about and throw some light on the topic seasonal dermatological ailments. Okay, so today we are going to talk about some seasonal dermatological diseases. I have tried to make this presentation in a very simple manner. मैंने try किया है कि इसको थोड़ा simple रख सकें, जिससे dermatology का एक basic idea जो हमारे MBBS students हैं और NMO के members हैं उनको लग पाए। तो मैंने थोड़े complex terminologies जो कि dermatology residents को generally पता होते हैं वो avoid किए हैं। बाकी आप अपने questions मुझसे पूछ सकते हैं at the end of the session. We are open to all sorts of questions. So, my name is Dr. Sumiti Pareek. Let's start. I'm a consultant dermatologist based in Jaipur. So first of all, we'll start with summer, because summer is the most important season when we talk about dermatological diseases. Dermatology OPDs are the heaviest in summers because of higher UV index. I think somebody's mic is on, so please turn it on, turn it off. Okay. So dermatology OPDs are the heaviest in summers because of higher UV index. There is higher exposure to sunlight, more sweating because of hotter climate, more rapid multiplication of infective microorganisms in warmer conditions. So there is rapid multiplication of various bacteria, viruses, fungi. So as a result, there are more infective dermatological conditions in summers. So we'll start with the most popular, Tinea corporis. You must have heard of this dermatological ailment, or you must have seen it somewhere. It is known as ringworm in common language. So it is characterized by presence of round, itchy lesions, raised red borders, central clearing, and these lesions are usually scaly. So based on the site they are present in, they are called Tinea cruris if they are present in the groin. If they are present elsewhere in the body, they are known as Tinea corporis. If they are present on soles of the feet, then they are known as Tinea pedis. If they are present on the ventral aspect of the hands, they are known as Tinea manum. So these are dermatophytic infections. These are infections caused by a particular class of fungi known as dermatophytes, which are basically keratin-loving fungus. So they cause infection in the skin, nail, and hair. Let's move further. Now, tinea or pityriasis versicolor. It is not the same as tinea corporis. It is a different fungal infection. It is caused by Malassezia, and now it is also very common in humid climates and summers. So it is also related to sweating, just like tinea. So it is characterized by presence of flat lesions. These lesions may be hypo or hyperpigmented. The term versicolor, it refers to the fact that tinea versicolor may be characterized by lesions of various colors. So there may be hypopigmented lesions, there may be hyperpigmented lesions, there may be white lesions, or there may be brown lesions, pink lesions. Now these are usually asymptomatic. While tinea corporis is extremely itchy, these lesions most commonly are asymptomatic. The patient does not complain of any sort of itching. Rarely the lesions are slightly itchy, but otherwise these are asymptomatic. They are centered around hair follicles and they are most commonly found in the trunk. So as you can see in the picture, there are small hypopigmented lesions which are present on the upper back of the patient. Next. Now, folliculitis or furuncle. So we use this broad terminology known as pyoderma
for bacterial infections of the skin. So folliculitis and furuncle are two types of pyoderma. So if the infection is limited to the hair follicle, it is known as folliculitis. If the infection or inflammation also spreads to the area around the hair follicle, then it is known as furuncle. So folliculitis or furuncle are also very common entities which are encountered in dermatological OPDs in summers. These are painful red lesions. They arise from a hair follicle. A folliculitis occurs as a result of bacterial infection. Furuncle, which is folliculitis with inflammation of the surrounding area. It may rupture to discharge pus and may heal with scarring. So this is a picture of folliculitis. मिलिएरिया रूब्रा, जो कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं घमोरिया होना, very common entity in summers. So it is characterized by pinhead sized red lesions which are associated with burning and or pricking sensation. So these are also known as prickly heat. So patient आपके पास आएगा, हो सकता है छोटे छोटे रेड बम्प्स के साथ आएगा जैसा पिक्चर में दिखाया है. The patient will complain that मेरे को सुइया सी चुभ रही है. In हिंदी या फिर मारवाड़ी में पेशेंट बोल सकता है बलत ला गया. बलत मतलब बर्निंग सेंसेशन हो रही है या फिर सुइया सी चुभ रही है. तो सुइया सी चुभना जो प्रिकिंग सेंसेशन है, दैट इज अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मलेरिया रूब्रा. द पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ अ टिपिकल बर्निंग सेंसेशन और अ प्रिकिंग सेंसेशन एंड देयर विल बी रेड bumps, red small pinhead sized lesions on the trunk, mainly on the trunk or on skin folds where the sweat has a tendency to get collected or there is excessive sweating. Now, polymorphic light eruption. So it is known as PMLE. We write this abbreviation PMLE. So PMLE is basically grouped polymorphic lesions which are usually itchy. They are present on sun-exposed sites, for example, limb extensors, and there is history of recurrence at the same site. So patient बोल सकता है कि I got these lesions at the same site last summer also. And अब वापस बीच में सही हो गए थे, आपने दवाई दी है. Now I got these lesions at the same site as the last time. So this will be the typical history of PMLE. And now PMLE, some people have a tendency to develop PMLE. हो सकता है वो बोले कि same group में मेरा friend भी काम करता है, but my friend did not develop these lesions, but I developed these lesions. So there is this genetic predisposition in some people. So they develop PMLE lesions on being exposed to sunlight. So before we move further, I would like to tell you guys that when you are seeing derma patients during summers, there are a few advices that you can give. आप बोल सकते हैं ताकि ये सारे infections और ये सारी conditions हम prevent कर सकें. तो वो advice आपको करना है कि पहली बात तो you will ask a patient to wear cotton clothes. So during summer, each and every one should wear cotton clothes, and the clothes should be of loose fitting. So you'll ask your patients to wear loose fitted cotton clothes. And then another thing कि आपको you have to wear full sleeves. Another very important advice in derma कि आपको गर्मियों में full sleeves पहने so that there is as little exposure to sunlight as possible. Full sleeves पहनने हैं, cotton clothes पहनने हैं, loose clothing पहननी है. If you have the kind of work where you experience a lot of sweating, you work in hot and humid conditions, then you should take a bath as soon as you get back home. And ये जनरल एडवाइस है जो आप अपने डर्मा पेशेंट को दे सकते हैं ताकि ये सारे इन्फेक्शंस और ये सारे कंडीशंस वो अवॉइड कर सके, प्रिवेंट हो सके उनमें. ओके, नाउ वील मूव ऑन टू मॉनसून्स. Now, monsoon is also very important from a skin point of view because a lot of people come to us with insect bite reactions. So, how will you identify insect bite reactions? Insect bite reactions are mainly reddish lesions. These are raised reddish bumps with central punctum. So, that punctum, it signifies the site where the insect has, it signifies the insect bite. So, the site of insect bite, it is represented by a central punctum, and the lesions are usually itchy and they are distributed in exposed parts of the body. So exposed parts of the body, for example, if the patient is a child who wears shorts, so uske legs pe you'll find these multiple bumps with a sense of punctum and the lesions will be extremely itchy. So insect bite reaction hai. Okay, next.
Very, very important, blister beetle dermatitis. This is something that we usually get only during rainy season. इसमें क्या होगा? The patient will develop blisters in a pattern, and that pattern is usually a streak-like pattern, जैसा ये picture में है. So as you can see that the patient has developed an irritant reaction in a streak-like pattern. The patient will give this typical history कि रात में सोया था तो I was all right, but I woke up with this. So क्योंकि the insect जो blister beetle है वो रात में walk किया patient के यहाँ पे and it left behind the toxin which is known as pedrin, which is an irritant which causes this irritant reaction on the skin. So it is not because of bite, it is because of an irritant reaction to the toxin pedrin, which is released by the insect blister beetle. So it is known as blister beetle dermatitis. It's characterized by blisters present in a pattern, usually in a streak. It is an irritant reaction to pedrin, which is a toxin released by blister beetle, and it is also known as Petrus dermatitis. Okay, next. Now, during monsoons, what advice can you give your patients? Because the main dermatological conditions that we experience during monsoons are insect related, are arthropod related. So you'll ask your patient कि पहली बात, while you go to sleep, try wearing full sleeves clothes. Another very important advice, a lot of people, especially in rural areas, they during monsoons when the when the climate is when the weather is really pleasant, they go to the roof to sleep. So you'll ask your patient कि roof पे नहीं सोना है. दूसरी चीज फ्लोर पे नहीं सोना है. मॉनसून में फ्लोर पे नहीं सोना, रूफ पे नहीं सोना, आपको बेड पे सोना है. यू हैव टू कीप योर बॉडी पार्ट्स कवर्ड. ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इंपॉर्टेंट एडवाइस है. एंड try to avoid sleeping under a light. Very very important advice, because क्या करते हैं कुछ लोग, लाइट है ऊपर उसके जस्ट नीचे सोते हैं तो इंसेक्ट्स they get attracted towards light. तो लाइट की तरफ अट्रैक्ट होकर इंसेक्ट्स they fall down and they cause all these conditions. ये पीड्रस डर्मेटाइटिस हो सकता है उनको, या दूसरे इंसेक्ट बाइट रिएक्शंस हो सकते हैं. तो यू आस्क योर पेशेंट कि अवॉइड स्लीपिंग अंडर अ लाइट, पहली चीज. दूसरा, wear full sleeved clothes. And तीसरा, avoid sleeping on the floor or on the roof. Okay, next. Winters. Now winters, perniosis. So perniosis is a very common entity that we encounter during winters. There are a lot of cases, especially women, of perniosis. So perniosis, as you can see in the picture, it is characterized by itchy and or painful reddish bluish discoloration of the skin of the toes. It may also affect fingers, but more commonly it affects the toes. And it is also known as chilblains. Chilblains we कहते हैं. So the patient will come with very itchy lesions. Either the lesions will be small papular lesions, or there will be diffuse redness or itchiness of the skin. And the patient will complain कि बहुत मेरे को खुजली होती है, दर्द होता है इसमें. And if you touch the skin will be warmer than the skin elsewhere. So this is perniosis. So especially women develop it, and it is the basic pathology or pathophysiology, though you do not have to read it in your MBBS years, but it is because of vasoconstriction of the deeper vessels, and as a result, there is compensatory vasodilation of the superficial vessels. So, as a result of compensatory vasodilation, the skin it is warmer and it is redder. Okay. Now we'll move further. Raynaud's phenomenon. So a lot of people confuse perniosis with Raynaud's phenomenon, but these are not the same thing. Perniosis is persistent. Perniosis में जो redness होती है, जो itching होती है, जो pain होता है, वो persistent होता है. वो जो patient या तो treatment लेता है या फिर जो protective measures लेता है, तब वो subside करता है धीरे over a course of a few days to weeks. Whereas Raynaud's phenomenon जो होता है, ये transient phenomenon है. तो transient phenomenon है ये. As a separate entity, it may be present or it may be related to a number of other dermatological diseases such as systemic sclerosis, okay, or other orthopedic diseases. It may be related to neural diseases, neurological diseases such as carpal tunnel syndrome. तो इसमें क्या होता है Raynaud's phenomenon में? There will be sequential color changes. तो पहले क्या होगा? There will be vasoconstriction. So as a result of vasoconstriction कब होगा? Stimulus रहता है usually cold or an emotional stress. So winters में जब ठंड है तब reflex vasoconstriction हो जाएगा. Vasoconstriction के कारण there will be pallor. The skin will suddenly become pale. उसके बाद vasoconstriction के बाद फिर वहाँ pallor हुआ, cyanosis के कारण the fingers will then turn blue. Blue के बाद फिर उसके बाद वापस
reperfusion होगा and the fingers will turn red. तो ये sequential color change होता है pale to blue to red. ये Raynaud's phenomenon है and in this condition you ask your patients to wear gloves. जो patients होते हैं जिनको Raynaud's phenomenon develop होता है उनको हम बोलते हैं कि आप gloves पहनो, protective clothing पहनो, wear woolen gloves and avoid working with cold water. कपड़े मत धो, बर्तन मत धो, क्योंकि Raynaud's phenomenon, it may even in serious cases it may even lead to gangrene. So we ask our patients to avoid working in cold environments, to avoid cold water and to wear protective gloves. Next, xerosis. Now, very probably the most common condition during winters is xerosis. So xerosis, it literally translates to dryness. So it is nothing but dryness of the skin. So the patient will come with dry and flaky skin, as you see in the picture. It is usually associated with itching and it may lead to various eczema if not treated in time. It is commoner in the elderly or in really young children. More common in the elderly because as you age, your skin loses the natural moisturizing factors that are present in the skin. So your tendency to develop xerosis on being exposed to cold wind, it increases. So this is xerosis. Next. Now, exacerbation of eczema. So eczema is a condition. There are various kinds of eczema. For example, we take atopic eczema as is given in the picture. So it gets exacerbated during winters because in winters the skin becomes drier. So as the skin becomes drier, the skin becomes more itchy, the patient itches, and then the eczema exacerbates. So there is worsening of pre-existent eczematous conditions like atopic dermatitis during winters. That is why winters are very important for patients who have various kinds of eczema, and it is also very, very important for dermatologists who have such patients. Okay, next. Psoriasis exacerbation. Psoriasis is also a very, very important dermatological condition which impacts the patient's life a lot. So it has a very, very it has a very bad impact of the patient's social, mental, and physical life. So psoriasis, it also gets exacerbated during the winters. Psoriasis typically is characterized by edematous and scaly lesions. The scale is typically micaceous, mica-like scale, silvery white micaceous scale. So the lesions, they tend to become more scaly, itchy, and they become more widespread in winters. So that is why for a psoriasis patient, winters are a very bad time. And the psoriasis patient, we ask our psoriasis patients to gear up when winters are around the corner. We ask our patients to apply as much emollient as possible and to visit us regularly if they experience any kind of exacerbation of the disease. Okay, so I try to cover three important seasons which are very important in dermatology. Any questions if you guys have? आप लोग पूछ सकते हो कोई भी क्वेश्चंस हो तो थोड़ा सिंपलिस्टिक मैनर में बनाया है ताकि सब लोग थोड़ा समझ पाए क्योंकि ये इट इज अ काइंड ऑफ ओरिएंटेशन टू डर्मेटोलॉजी डर्मेटोलॉजिकल एग्जैसरबेशन और डर्मेटोलॉजिकल कंडीशंस इन वेरियस सीजंस तो कोई क्वेश्चंस है इफ एनीबॉडी वांट्स टू नो एनीथिंग इन डिटेल दे मे आस्क अभी आप पूछ सकते हो इससे पहले बाकी लोग पूछें पर्क ऑफ बीइंग ऑर्गेनाइजर इज कि आप अपने क्वेश्चंस पहले पूछ सकते हो तो जो लोग भी पूछना चाहते हैं यू कैन जस्ट कीप रेजिंग योर हैंड वो नीचे जूम पे पैनल में आपको ऑप्शन मिल जाएगा यू कैन रेज योर हैंड and by then I'll ask two of my questions. So boss, first question is regarding blister beetle dermatitis. What is the approximate period of time for which this remains? So for instance, it happened to me and without treatment I went for like almost 4 months. तो उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता था एंड व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन? तो ऐसा है कि इट इज एन इरिटेंट रिएक्शन, इट इज नॉट एन इन्फेक्टिव कंडीशन. तो टॉक्सिन जो है वो इट हैज बीन रिलीज्ड. तो इरिटेंट रिएक्शन, वो टॉक्सिन जहाँ पे रिलीज हुआ है वहीं पे लिमिटेड रहेगा. इवन इफ यू डू नॉट गेट इट ट्रीटेड इट विल नॉट इंक्रीज. पहली बात ये कि वो उधर ही रहेगा. बट spontaneously it will take some time to resolve. It will be inconvenient for you, it will be painful, it will be itchy, there will be burning sensation. तो खुद से रिजॉल्व होने में एंड इट विल लीव बिहाइंड पिगमेंटेशन.
ये blister beetle dermatitis, because I also got a very bad case of blister beetle dermatitis when I was in my MBBS third year. So it left behind pigmentation, bad pigmentation. So अपने आप से सही होने में it will take about 25 to 30 days, and the pigmentation might take longer. बट अगर आपके पास पेशेंट है तो आप पेशेंट को हेल्प कर सकते हो. यू कैन मेक इट मोर कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट. You can give a combination of a moderate potency topical steroid and a topical antibiotic. For example, if the blister beetle dermatitis is on the face or on the neck where the skin is thinner than elsewhere, तो वहां पे आप दोगे मोमेटासोन, क्रीम मोमेटासोन, which is a moderate potency topical corticosteroid, and cream fusidic acid you can give. And other than that, you can give antihistaminics such as levocitrazine or hydroxyzine, so that the patient does not experience burning sensation or itching. तो उसके लिए आप वो दे सकते हो. Okay. And the second question is, particularly if we talk about psoriasis, so it is like also leaving a mental scar on the patient. So because I'm working in that domain, I want to know what is it that we exactly can address in such patients, क्योंकि बहुत ज्यादा एक मेंटल ट्रॉमा होता है, पर्टिकुलरली चिल्ड्रन बिलो 18. उनको Yes. मतलब समझ में भी नहीं आता है कि आप क्या बोल सकते हो, और वो तो ऑब्वियसली एक डीप स्टेट ऑफ ट्रॉमा में होता ही है मेंटली. उसके लिए एनी Yes. सजेशन? There is a particular discipline of dermatology known as psychocutaneous dermatology. So क्या होता है कि a lot of dermatological conditions, they are related to the mind, in the sense that they impact the mind, and the mental condition impacts the state of that disease. So if a patient is under a lot of stress, their psoriasis will flare. So a lot of, if a patient is under a lot of stress, a patient has been very stressed up about a life event, कुछ traumatic हो गया, या फिर maybe an exam, so their psoriasis will flare, and psoriasis flare के कारण again the patient, may experience further stress. So this is a psychocutaneous axis which is very important in dermatology. तो आप अपने patient को, something that I recommend my patients, if you have developed psoriasis at a very young age, it is very important that you learn meditation and yoga. This is something that I personally recommend my patients. A lot of times we get patients who develop psoriasis at the ripe age of 16 or 17. Then it is a long battle. Because when you develop a dermatological condition at a young age, then the prognosis is not very good. In maximum dermatological conditions, the prognosis is not very good. The chances are that you will have to live with that disease for the rest of your life. So it can be kept under control with medicines, but we have to teach our patient कि आप सीखो, learn to live with this disease, learn to control this disease. So one way that you can control this disease is by being mindful, by keeping your stress levels under control. तो कुछ स्पोर्ट्स सीखो. दिस इज समथिंग दैट आई पर्सनली रिकमेंड कि कोई स्पोर्ट्स सीखो, बिकॉज स्पोर्ट्स में फिजिकली भी आप फिट रहते हो, एंड देन इट आल्सो रिलीजेस अ लॉट ऑफ एंडोर्फिन्स. तो स्पोर्ट्स सीखो, योगा सीखो. आपको अगर मेडिटेट कर सकते हो, आप मेडिटेट करो, फाइंड सम टाइम फॉर मेडिटेशन. इट रियली हेल्प्स. और दूसरा जो साइकियाट्री का दूसरा डोमेन है, which is very very important in psoriasis patients, is addiction. So a lot of patients are alcohol addicts and smoking addicts, tobacco addicts. So alcohol and smoking are two etiological factors which are the most important in psoriasis. So if you consume alcohol daily or even occasionally, and if you smoke regularly, then it is very very difficult to keep your psoriasis under control even with the nicest of meds. So if you have patients who are young and who are under the effect of these substances, then you advise them कि seek help और आप ये छोड़ो, तभी आपकी बीमारी सही होगी. तो these are two important aspects जो आपको कवर करने हैं. एक तो साइकोलॉजिकल वेलबींग, एंड दूसरा अगर एडिक्शन है पेशेंट को, तो दैट आल्सो कम्स अंडर साइकियाट्री. तो दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, that important facet that you have to deal with in a psoriasis patient. थैंक यू सो मच बॉस. और किसी के कोई डाउट है? हमारे पास भी कुछ समय है. नवराज, स्पर्श, खुशी, दीपक. We also have Manoj Gupta sir and Dr. Pavan ji with us, and Dr. Jitendra has also joined. Jitendra, you seem to have some question. हाँ, तो पूछो, अनम्यूट करके पूछो.
हेलो। पूछो पूछो। आवाज आ रही? हाँ हाँ। बहुत मैं ये पूछ रहा था कि मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स देखे हैं तो स्टेरॉइड की जो ऑइंटमेंट आती म्यूट हो गया भाई, फिर से म्यूट हो गया। है। हेलो। हाँ हाँ हाँ, अभी आवाज आ सेकंड में रही है। बोलो। हाँ वो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने ना बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे देखे हैं जो स्टेरॉइड के ऑइंटमेंट आते हैं, जैसे डेक्सामेथासोन हो गया, बेटामेथासोन हो गया। ये बहुत सारे डॉक्टर्स रैंडमली प्रिस्क्राइब कर रहे हैं बिना को देखे कि क्या है क्या नहीं है। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जहाँ पे प्रिस्क्राइब करना जरूरी है, और कौन कौन से ऐसे जहाँ पे बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जैसे फंगल है तो फंगल में तो करते ही नहीं है। हाँ, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। और ये मुझे लगता है कि डर्मेटोलॉजी हो आपका सब्जेक्ट या नहीं हो, ये एक बेसिक वो है जो आपको पता होना चाहिए कि इफ द इटियोलॉजी इज इन्फेक्शियस तो आपको स्टीरॉइड नहीं यूज करना है, क्योंकि वो उसको फ्लेयर करेगा। तो फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन है तो अवॉइड यूजिंग स्टीरॉइड्स। ठीक है, क्योंकि वो एक बार के सप्रेस करेगा एंड देन द पेशेंट विल एक्सपीरियंस सडन फ्लेयर। तो हो सकता है 7-8 दिन तो पेशेंट आपसे बहुत खुश रहे कि क्या दवाई दी है, एकदम दब गया। पर उसके बाद द पेशेंट विल सडनली एक्सपीरियंस अ वेरी बैड फ्लेयर। तो avoid giving topical corticosteroids in patients who have infectious conditions such as tinea or maybe pyoderma, maybe anything else. और दूसरा, जो ऑटो इम्यून कंडीशंस होती है स्किन में, बहुत सारी कंडीशंस जो होती है ऑटो इम्यून होती है। तो ऑटो इम्यून क्या है? आपकी इम्यूनिटी जो है वो ओवर एक्टिव है। तो उसमें लिम्फोसाइट्स का ओवर एक्टिवेशन हो गया, जनरली टी लिम्फोसाइट्स का ओवर एक्टिवेशन से होती है। तो उस सिचुएशन में आपको यू विल हैव टू गिव एन इम्यूनोमोड्यूलेटर और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स टू सप्रेस दैट ओवर एक्टिव इम्यूनिटी। तो जैसे सोराइसिस है, ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो उसमें आपको देना पड़ेगा टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देना पड़ेगा। पर अगेन वेरी ट्रिकी थिंग, सोराइसिस में टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जरूरी है, बट ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सोराइसिस में आप ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड नहीं दे सकते, वो टॉपिकल दे सकते हो। बाकी कंडीशंस, ऑटो इम्यून कंडीशंस जैसे विटिलाइगो हो गया, उसमें आपको टॉपिकल और ओरल दोनों कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हो आप। उसके अलावा एलोपेशिया एरियाटा हो गया, उसमें देना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस हो गई, एसएलई हो गया या सिस्टमिक स्क्लेरोसिस हो गया, उनमें देना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ऑटो इम्यून पैथोलॉजी वाली डिजीजेस हैं उनमें आपको देना पड़ेगा, जो इन्फेक्टिव पैथोलॉजीज हैं उनमें आप अवॉइड करो। मैं जी। ये कह रहा हूँ, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन डॉक्टर थैंक यू सुमिति। सर, थैंक यू। वेरी नाइस, रियली थैंक यू सर, वंडरफुल। थैंक यू। जी सर, मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। इट वाज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस मेरे लिए भी। बहुत टाइम बाद कुछ सेमिनार देने का या कुछ ऐसे पढ़ाने का मौका मिला, तो बहुत अच्छा लगा। एंड बाकी प्रद्युम्न ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराता रहता है, पेन लेता है उसके लिए हमेशा से। तो वो दैट इज समथिंग वर्थ अप्रिशिएटिंग। और मतलब थैंक यू टू प्रद्युम्न फॉर इनवाइटिंग मी, एंड सबके लिए थैंक यू। आप लोग इतने पेशेंट रहे और सबने सुना। और आई होप कुछ गेन किया हो, नहीं गेन किया हो तो प्लीज आप लोग कभी भी प्रद्युम्न से मेरा मेरा कांटेक्ट लेके मुझे पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि हम एक बहुत ही होलिस्टिक मैनर में हमारे पेशेंट के लिए हमेशा अवेयर रहेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है तो ये खराब है, या ये मेरी स्पेशलिटी नहीं है तो ये खराब है। डेफिनेटली स्पेशलिस्ट डील करेगा उस कंडीशन के साथ, पर हम हमारे पेशेंट को बिगाड़ के नहीं भेजें, ये हमारा एम रहना चाहिए। काफी बार क्योंकि हमारे पास एक बेसिक नॉलेज नहीं होती, डर्मा पढ़ाई नहीं जाती है मेडिकल कॉलेज लेवल पे, तो हम भी इक्विप्ड नहीं होते विद इनफ नॉलेज टू नॉट मेक इट वर्स। तो बस वो एक बेसिक इस तरीके का आधे घंटे का कॉन्वर्सेशन भी अगर हमारा हुआ हो तो हम वैसे बेटर इक्विप्ड रहेंगे। ये नॉलेज के साथ भी हम हमारे पेशेंट को एक होलिस्टिक मैनर में, आपके पास कोई सोराइसिस पेशेंट आया या कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन का पेशेंट आया तो ट्रीट कर सकते हैं, और नहीं तो रेफर कर सकते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास विदाउट मेकिंग इट वर्स। वही बहुत ज्यादा मैटर करता है। सारी जब हम एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम में काम करते हैं तो हम एक दूसरे को इसी तरीके से हेल्प कर सकते हैं। बस